देखिए, अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटिशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। मैं कह रहा था, तो आपको कौन मना कर रहा है? आपकी पिटिशन देखिए पेंडिंग है 2022 से। डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ, ये बताइए ना। उसमें उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना। आप ये भी हो जाए तो ये खुद भी सब तैयार हो। देखिए, देयर मस्ट बी सम लॉ फॉर रेगुलेटिंग द यूट्यूब। इफ देयर इज नो लॉ देन देयर इज नो रूल्स, देयर इज नो लॉ है। एक सेकंड, ये बात कर रहे हैं जी सर, बात ये इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए कैमरा है, उसको उन्होंने रेगुलेट किया है ऑर्डिनेंस के तहत ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 का ही है, तो उसके अंदर वो चीजें बन रही है ना। इफ देयर सम लॉ दैट शुड बी रेगुलेटेड और शुड रेगुलेट दी, सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है। डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ, ये बताइए ना। उसमें उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना। आप पिका में आप उसको कर तो रहे हैं, बट वो आप हाउ टू रेगुलेट दी यूट्यूब, ये तो बताइए आप। My lord, there are laws. The only problem is that they don't come with specificity, and they are more on the criminal side. And problem होती है कि कोई gray area नहीं है, या तो they say wild things on digital media and wilder things happen to them, and that's the problem, isn't it? Because there isn't that legal framework. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब वो 2002 का जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें तो कवर होते हैं, बिकॉज पब्लिकेशन का मतलब इंटरनेट भी है उसके। सर पेज 15 पे मैंने वैसे टेबल लगाई हुई है सारे लॉज की। पेज 15 पे सर अगर आप नंबर 3 पे देखेंगे, सो देयर इज दैट रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, प्रोसीजर, ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स ऑफ 2020। अच्छा, ये पेज 15 है पिटिशन की। दिस इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 27 ऑफ 2022। नहीं, वो लॉ कौन से आप कह रहे हैं सर? ये है रिमूवल एंड ब्लॉकिंग की जो फर्स्ट प्रेयर है ना, माय लॉर्ड, डायरेक्ट्स द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक कोड ऑफ conduct. But tomorrow you will be the first to criticize us that this is amounts to censorship. Okay, and the Supreme Court had no jurisdiction. Please assist us on these points. I mean, what power are we exercising? Are we legislating? Yes. Are we interpreting a law? Yes, we can do that. If there's some provision in the law, we can maybe interpret it in your favor. But if there's no provision in the law or in the Constitution, how do we go ahead with it? We can certainly request all stakeholders to meet and come up with a code of conduct. So, but does it translate into a binding judgment of the Supreme Court that can be acted upon then or not? If someone says, I won't, then federal government says, I won't do it. Then what do? My lord, we issue them a contempt notice on what basis? On a wish? My lord, my humble submission is that the enforcement of constitutional rights like Article 19, which not only put restrictions, but inherently legislation is required. आप थोड़ा हाँ sorry, so sir, अभी तो सर आप जिस तरह आपने बात की, I think from whatever casual talk I've had with everyone is ready to sit down and talk about it. We can start with that. Not in this case, my lord. Not in this case. एक सेकंड, एक सेकंड मती साहब, ये बात कर लेना थोड़ा सा, हम एक दूसरे का लिहाज तो रखें ना। हैदर वहीद साहब, देखिए, अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटिशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। मैं कह रहा था, तो आपको कौन मना कर रहा है? आपकी पिटिशन देखिए पेंडिंग है 2022 से। ठीक है, हम 24 में आ गए जी। जितनी मर्जी आप टॉक्स कर लें, आपको मना कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि अदालत क्या कर सकती है, आपकी मदद चलें, ये भी कर लें, मदद भी करना चाहते हैं, हम करें कैसे? ये बताएं, हम किस किस्म का ऑर्डर पास करें? My lord, my humble submission is that the enforcement of Article 19 and the बताएं ना आपने। अच्छा, enforcement of which provision of Article 19? ये भी आप देखिए, ऐसे गोल ऐसे ना कर देना। Article 19 में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ, रीड Article 19। my lord, ये आपने लगाई है कॉपी, आपको 1 मिनट से मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इन द मीनवाइल मैं पढ़ लूँ। ये रिमूवर एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, प्रोसीजर, ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स 2021। My lord, I'm just going to provide, sir, I'll provide. इसे किताब में पैमरा लॉज के आप बता दीजिए क्या कौन सी आर्टिकल 19 में एक पार्ट है जो कि इजाजत देता है, दूसरा पार्ट है जिसमें ममानियत है। आप ममानियत कर रहे हैं या इजाजत वाली बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ आर्टिकल कह नहीं, कानून क्या कह रहा है? My lord, कानून ये कहता है, पढ़ लीजिए प्लीज। जी सर, मैं आर्टिकल, आजकल फैशन हो गया बगैर पढ़े चीजें आर्ग्यू करो।
भाई देखिए, आर्टिकल 19 के दो पहलू हैं। एक पहलू कहता है सबको इजाजत है, फिर उसके बाद वो जाके रुकावट डाल देता है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल। I'll read Article 19. हाँ, तो अब हमें आप कह रहे आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करें, तो कौन सा पहलू? दोनों पहलू करें, एक पहलू आप जी मैं पढ़ देता ना। हूं पहले। Freedom of speech. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or the defense. एक सेकेंड, तो एक हो गया इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, पहला रुकावट। दूसरा इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस। चलिए इसको एक ही हम तस्वुर कर लेते हैं। दो और एनी पार्ट thereof, friendly relations, ये हो गया तीसरा रुकावट आ गई, तीसरी रुकावट आ गई। public order, ये चौथी रुकावट आ गई। contempt of court, decency or morality, इसको पांचवी रुकावट कर लें। or in relation to contempt of court, the छठी commission रुकावट of or incitement to an offense. तो 7 रुकावटें आ गई। आई ने बनाई है, जरा ये हम वजाहत करते चलें, हमने नहीं बनाई है। बिल्कुल ठीक है। अब आप जब कह रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 19, तो अब आप बताइए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात कर रहे हैं, जो दो राइट्स दी गई हैं, फिर इसमें ये आ गए रिस्ट्रिक्शंस। तो आप ये सिर्फ ये बात करना कि आर्टिकल 19 की इन्फोर्समेंट से मुराद आपकी क्या है? My lord, my humble submission is that the entire article is being applied to broadcast media but not to digital media. अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।